dear God, not again. Yes, I'm still in Da Nang and I still haven't been able to find a good meal to eat. So much culture, so many amazing sights, and such amazing weather. But what is up with the food here? I've never struggled this much in any city, anywhere I've been in the world. Today I head to Hoi An, a UNESCO World Heritage Site very close to Da Nang. And again, I was let down by the limited food options. For me, no food means no fun, no matter how amazing the sights around me might be. Watch till the end of this video to see what hot meal I finally managed to eat after nearly 3 days. It was a meal that made me have a very happy meltdown. I'm going to a tour to Hoi An today. एक ancient city है which is about 20-30 minutes drive from Da Nang. 30 minutes drive from Da Nang. मैंने एक tour book की है. Again उनके पास halal options नहीं है, but they said they'll try and arrange some seafood options. Let's see how that goes. मेरी गाड़ी जो मुझे पिक करेगी फ्रॉम द टूर कंपनी, इट्स ऑन इट्स वे, इट विल बी हियर एनी मिनट. सीन ये है कि टेक्निकली मुझे 3 दिन हो गए हैं दानांग में. मैंने एक ही प्रॉपर मील खाया हुआ है एंड दैट इज़ दैट पिज़्ज़ा आई हैड द फर्स्ट नाइट आई अराइव्ड. सो आई एम स्टार्विंग. मुझे कोई अच्छा नरिशिंग खाना चाहिए, प्रॉपर फूड, ठीक है. अ हॉट मील इज़ व्हाट आई वांट. The tour company I booked with picked me up in the late afternoon from the doorstep of my hotel in Da Nang. They were punctual, which is nice because I'm Pakistani and I'm not used to things happening on time. Anyway, before they take you to Hoi An, there's a couple of stops they do along the way. One of those was a place called Marble Mountain. I had no idea we would be needing to climb a mountain because I was wearing open flat shoes. Bad idea. But thankfully, this mountain has an elevator. Yes, a mountain elevator. Mostly elderly people were using it. The young people were just taking the rough cut stairs in the mountainside, which I could not because of how inappropriate my shoes were. At Marble Mountain, you can visit 200-year-old pagodas and temples built by Buddhist worshippers, as well as some really slippery caves. I always marvel at how people from this faith used to retreat to mountains in difficult terrains and not only worship there, but also spend a lot of time living there. There were also some really old statues that have been nicely preserved and maintained very well. Look at the view of Da Nang city from up here. It was stunning, and the rainy, cloudy weather really added to the mood of the place. And then it was time to leave and head on to the old, ancient, historic town of Hoi An, which was the main attraction for this tour. So there was also a stop at a marble factory जहाँ पे उनके marble के statues थे and what not. उसमें मैं अंदर नहीं गई because I was scared कि मैं कुछ तोड़ दूँगी, because वो packed था with marble statues, छोटे बड़े हर size के. So I didn't go inside. I'll just insert some photos. And we have arrived in Hoi An, और straight away वो हमें खाने के लिए ले आए. पहले आप खाना खाएं, फिर आप explore करते रहना. So this is the restaurant they've brought us to. One big issue that I faced here कि when you book tours तो वो उसमें food include करके आपको charge करते हैं, but then they don't provide you halal food. So मैंने आज थोड़ी सी शक्ल बनाई कि ये क्या सीन है, या तो आप मुझे पैसे ना charge करें if you can't provide me the food that I need, or you provide me the food that I need. So थोड़ा सा मैं firm हुई, तो अब उन्होंने कोई vegetarian options arrange किए हैं. So let's go check out what they have. मेन्यू इनका है वेजिटेरियन वाला braised eggplant, vegetarian spring rolls, sweet and sour fried rice, नहीं sweet and sour fried vegetable, vegetarian fried wonton, vegetarian curry, vegetable fried rice, and dessert. Curry soup, rice, eggplant, Spring roll and wonton, fried wonton. this is what? Spring roll, No, what is this? curry. Okay. Let's go over the food. ये है vegetarian curry जो कि यखनी की तरह लग रही है. Then we have fried rice. And they've given me a spring roll and a fried wonton. Then there is sweet and sour fried vegetables.
And then there is braised eggplant. I would have liked something with mushrooms in it, but अब इसका कुछ नहीं हो सकता. I'm going to start with the curry, the vegetable curry, and मीठी. It's not bad, but it's too sweet. ये मसला है वियतनाम के खाने के से मुझे सबसे बड़ा कि सब कुछ बहुत मीठा है. Even the spicy food is मीठा. The rice is actually really nice. Let me try the braised eggplant. Braised eggplant बस आप समझें कि बैंगन है. It's so unbearably sweet. बैंगन अगर एक dessert में हो तो कैसा लगेगा? That's how the braised eggplant is. Vegetables तो उन्होंने पहले से ही कहा है कि sweet and sour हैं, so fried vegetables really good. Curry is okay. Braised eggplant is horrible. Fried rice is really good. और ये fried wonton जो कि basically पापड़ है. I think ये जो उन्होंने चिली सॉस साथ दी हुई है ये तो मैं ख़त्म कर दूँगी. चिली सॉस भी मीठी है. I cannot believe ये मेरा पहला proper Vietnamese meal है और सब कुछ मीठा है. Spring roll. The vegetarian spring roll. I can tell इसमें carrots तो मुझे आ रही हैं taste में. बहुत शोर है यहाँ पे, sorry. एक बच्चा पीछे बहुत ऊंचा रो रहा है. The spring roll was really nice. इतनी भूख लगी हुई है दोनों हाथों से खा रही. Oh, finally, इसमें spice है. This is nice and like not super spicy but हल्की सी इसमें spice है. अच्छा, शोर बहुत है इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरा मुंह के पास लेके आई हूँ. माइक्रोफोन चल नहीं रहा. इसमें करी में सो कॉल्ड करी में ये कह लें आप मीठी सी यखनी है विद कैरेट एंड आई डोंट नो ये क्या है. लेट मी टेस्ट इट. शलजम है. सम सॉर्ट ऑफ टर्निप एंड इट्स अ बिट स्वीटिश. चावल मैंने ऑलरेडी बताया था, चावल बहुत अच्छे हैं. देयर लाइक स्टर फ्राइड राइस विदाउट स्पाइस. तो ये वेजिटेबल्स हैं स्टर फ्राइड और ये भी मज़े के हैं. स्प्रिंग रोल और वॉन्टॉन में खा चुकी हूँ बिकॉज बहुत भूख लगी थी. और braised eggplant is by far the worst dish right now on the table. I'm going to take some of the braised eggplant. इसके ऊपर मैं ये जो इन्होंने चिली सॉस दी हुई है वो मिक्स करके चावलों में फिर खाती हूँ. बहुत ही ये कोई अनएपेटाइजिंग चीज़ लग रही है एगप्लांट. बट ये चिली सॉस तो मेरे लिए एक बाइट में ही ख़त्म हो जाएगी. इनकी चिली सॉस इज़न्ट स्पाइसी. ये कुछ चिली फ्लेक्स वाली सॉस है विच इज़ ऑल्सो नॉट स्पाइसी. दे इंटेंड फॉर इट टू बी स्पाइसी लेकिन हो नहीं पाया. होपफुली ये एगप्लांट जो है इसका मैं एक बाइट बनाती हूँ एंड होपफुली अब ये उतना मीठा टेस्ट नहीं करेगा. अब थोड़ा बेरेबल हो गया, अब खाया जा रहा है एटलीस्ट. अब जो प्राइमरी फ्लेवर है वो मिठास का नहीं आ रहा. पहले हल्का सा स्पाइस का आता है बट लाइक व्हेन आई से स्पाइस आई डोंट मीन लाइक पाकिस्तानी स्पाइसेस. आई मीन लाइक हल्की सी यू कैन टेस्ट थोड़ी सी वो जो मिर्ची होती है राइट, हल्की सी एंड देन इट गेट्स watered down by the sweetness. Not a fan, still not a fan. I'm normally a very big fan of stir fries और सब्जियां मैं घर पे all the time I'm making them myself. Vegetarian only stir fries as well. I don't necessarily put chicken in all of them but I do put a protein source in there. Either mushrooms या tofu. इन्होंने कोई भी नहीं डाला, एग भी नहीं डाला चावलों में कि मतलब कोई मेरे अंदर प्रोटीन चला जाए. So I know I'm going to be super hungry after this meal as well because ये literally just सब्जी और थोड़े से कार्ब्स हैं. इसमें प्रोटीन किसी भी एंगल से नहीं डला हुआ इस मील में. Guys, they've also brought dessert जो कि इस पत्ते से मैं लपेटा हुआ है. So the whole of it, I open it. Okay. This? Okay. This you don't eat? Okay. Sorry. गलत मैंने गलत सुना था.
उतारना होता है। थोड़ा उसने इशारे से बोला था कि शायद इसी को खाना होता है, लेकिन एक्चुअली कह रहा था इसको उतारना होता है। इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत ही कोई फनी किस्म की चीज़ है ये। मतलब नॉट चीज़ एज चीज़ वाली चीज़ की बात नहीं करी, चीज़ की बात कर रही हूँ कि तू चीज़ बड़ी है वाली चीज़ की बात कर रही हूँ। कुछ अजीब सा है, कुछ स्टिकी सा है, पता नहीं क्या है, लेकिन बुरा नहीं है टेस्ट में। शाइनी सा थोड़ा, पता नहीं किस चीज़ में लिपटा हुआ है। मैंने ये पूछ लिया था कि ये जेलेटिन तो नहीं है, दिस साइड नहीं, जेलेटिन नहीं है। I have no idea क्या है, I'm unable to describe it. It's a bit coconutty and it's not bad. I like it. And now we were given about 2 hours to explore the charming ancient town of Hoi An. If you're planning a trip, I strongly recommend coming here in the evening or night because this is how it looks in the daytime. I mean, it's not terrible, but in the evening, it comes alive. It almost feels magical to the point it feels like you're in a virtual postcard. Or, as they say, it's very, very Instagrammable. Hoi An's architecture is a beautiful mashup of Vietnamese, Chinese, Japanese, and French influences. Every building tells a story. Some of them are almost 300 years old, which is exactly why it's listed as a UNESCO World Heritage Site. And then there's the Thu Bon River, I hope I'm pronouncing that right, which is right in the center of Hoi An. During the daytime, boats gently float by and they carry fresh produce and travelers, but at night, it transforms into pure magic. Here you can hop onto a boat, light a candle lantern, make a wish, and set it free. Locals believe these bring good luck. Or, it can just be a really cool memory to flex to your friends. I'm sitting by the edge of the river, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा risky है because मैं थोड़ी सी clumsy हूँ, so I'll make this quick. You can come here, you can take a boat ride. लोग ले रहे हैं, मैं नहीं ले रही because मुझे पता है मैं गिर जाऊँगी. I just know I will fall into the water. You can buy a lantern and you can take it on the river on the boat with you and you can set it on the water. मैं वो नहीं कर रही क्योंकि एक तो टाइम की कमी है, दूसरा मुझे डर भी लग रहा है कि मैं पानी में गिर जाऊँगी. Swimming आती है लेकिन I don't want to get wet. Speaking of lights, Hoi An is famous for its lanterns. These handmade lanterns add a soft, dreamy glow to the town and you can see them everywhere. Especially during the Lantern Festival, it's like walking through a fairy tale. I would not advise staying in Hoi An though, because there's very few things to do here. And you can easily do all of them in a day trip or an evening trip. There's limited restaurant and food options here as well. And if you're someone who eats halal food or vegetarian food, then they become even more limited. Anyway, it was finally time to leave and head back to Da Nang. And just like after my Bana Hills tour, I was very tired, but not tired enough to fall asleep without eating some food with meat in it. I was so hungry when I got back to Da Nang, I dumped my stuff at the hotel and set out to look for a hot meal with lots and lots of meat in it. I got done with Hoi An and I got back home to my hotel and I was so hungry because I had just had vegetarian food without any protein in it. There were no mushrooms in it of any kind. कोई चीज़ नहीं थी, कोई उसके अंदर bean curd नहीं था जिसको tofu भी कहते हैं. There was absolutely no protein source of any kind. So obviously मेरा पेट उससे नहीं भरा था. And I got home, I googled a halal restaurant because I really wanted to have chicken or beef. And Google showed me this restaurant called Halal Kareem Food, Vietnam, and it showed that it was open and that it was going to close at 10:30 p.m. Okay? So I left my hotel at 9:30. I got here at 9:45 and it's closed. Band pada hai. I have never in my life been this let down by Google. Not just Google Maps, but Google in general, looking for recommendations or looking for अगर मैं किसी चीज़ को Google करती हूँ उसके timings क्या है, never have I been let down. It's always been super accurate for me no matter where I've traveled. But in Vietnam, it's just been chaotic. You cannot trust Google in Vietnam at all. It is terrible and I'm so hungry right now.
मुझे इतनी भूख लग रही है मैं बता नहीं सकती. Da Nang has been a disaster for me in terms of food. I have been super disappointed by the food scene. मैंने बहुत सुना था कि इनका food capital है or whatever, but it's just been one disappointment after the other, except for the pizza that I had the first night, which isn't really a Vietnamese specialty. So I've googled another restaurant just now, Istanbul Kebab House, and it's saying it closes at 11 p.m. It's 9:52 right now. Location show कर रहा है कि यहाँ से 6 minutes की bike ride है. So I should get there well in time. Let's see अगर वो खुला हुआ होता है या नहीं. बारिश में भीगती हुई जा रही हूँ मैं बाइक पे. अगर ये खाना अगर ये भी बंद हुआ ना ये वाला रेस्टोरेंट तो मेरे सर फाड़ देना किसी का. ये इतना फिल्मी व्लॉग होगा. बारिश में भीगती हुई लड़की अपने मकान पे जा पहुंची है. मकान होते हैं, मकान तो घर होता है. अपने मकाम जो भी. बहुत भूख लग रही है. रेस्टोरेंट इज ओपन, थैंक गॉड. आई एम गोइंग टू ऑर्डर. गाइस 2 सेकंड हुए हैं मैंने कबाब का वर्ड देखा है और मेरे मुंह से रालें टपक रही हैं कबाब का सोच के. भाई काश ये सीख कबाब होते पाकिस्तानी स्टाइल, but I guess Turkish will have to do. Oof, look at this, look at this. Meat. Oof, oof. सब्जी ना दिखाओ मुझे प्लीज़. सब्जी नहीं मैं देख सकती इस वक्त. This is what I want. Grilled roti something. Can I get this one please? This one. Chicken skewers plate. Chicken skewer, right? Yes. This is with rice? Yeah, it's got all dry. Rice and... Oh yeah, liquor, tomato, okay, and no fries with this? no fries. Okay, that's fine. That's fine. For the first time मैंने मेन्यू पे देखा है कि उस पे लिखा हुआ था lamb chops and then chicken chops. Chicken के chops क्या होते हैं? मैंने chicken leg piece का सुना है. I've never heard of chicken chops. I am a huge fan of vegetarian food, by the way. But you can't just serve a vegetarian meal option without any protein in it. Protein isn't restricted to meat only. ठीक है उसमें you can add protein in a dish by adding cheese to it. You can add it by adding yogurt to it. Dal, lentils, chickpeas, red beans, tofu, mushrooms. There's so many sources of protein that you can use. Plant-based protein that you can use. If nothing else, then in the stir-fried rice they gave me, they could have added egg. You know, कोई तो source होता of protein. वो मैंने literally सब्जी खाई है, घास खाई है. ऐसे नहीं खाई जाती सब्जी. ठीक है, vegetarian खाना ऐसे नहीं होता. This is not how vegetarians eat. So, anyway, enough about that. Can't wait for this food. So I've moved indoors because बाहर बारिश की वजह से वो लेफ्ट ओवर पानी जो है वो बार बार मेरे टेबल के ऊपर आके गिर रहा है, छत से सीप कर रहा है. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू मूव इनसाइड क्योंकि इट्स ऑल्सो लेस नॉइजी इनडोर्स बाय वॉट शो रहा है. ओह माई गॉड, माई फूड इज हियर. लुक एट दिस चिकन, सो जूसी, फ्रेश ऑफ द ग्रिल. अल्लाह मियाँ, शुक्र है टर्क्स का कि वो हर जगह पहुँचे हुए होते. The Turkish are the brown people of the Muslim world. They're everywhere. Please excuse my manners. आज मैं जिस तरह खाने लगी हूँ ना, ये कटलरी ऐसी क्यों दी है बांध के. खाना तो मुझे, मैं जल्दी में हूँ. Excuse me. ओह मुझे टर्किश खाना पसंद भी नहीं है, बाय द वे. आई डोंट इवन लाइक. चावल, ओह बासमती मैगी. बिल्कुल खाना खाना भूल गए.
मुझे तो लग रहा है मैं इस तरह की एक और प्लेट खा दूंगी, ये तो बहुत जल्दी खत्म होगा। ओह, आज मैं सारी तमीज़ तहजीब सब भूल गई हूँ। मेरी अम्मा जब ये वीडियो देखेंगी वो भूल जाएंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू शो के ये देखें, इवन विदाउट द नाइफ ये चिकन ब्रेस्ट इतनी टेंडर है। यू गाइज नो हाउ chewy and dry chicken breast can get, और ये देख, this is done to perfection. Oof. I'm not even swallowing between bites. मुझे खाना खाने दे आराम से, ओके? मैं बाद में रिव्यू देती हूँ। It should come as no surprise कि मैंने कल वाली वीडियो का आउट्रो नहीं रिकॉर्ड किया। Oh my god, I am the worst YouTuber there ever was. Anyway, so the food was amazing. मुझे बहुत उससे एनर्जी आई और बहुत मुझे उससे zest मिली to explore the local cuisine of Da Nang, and it's the next day now and I'm here at Halal Food Kareem, the same restaurant I went to जो कि कल रात close था। मैं उधर आई हूँ आज दोपहर के 4 बज रहे हैं, and I'm going to try some local Vietnamese food in halal form, so thank God for that. If you want to check out my review of Halal Food Kareem, you can check out this video right here.